तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप लोग का। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला हूँ। I'll start it right away and सर का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा परिचय दे दूँ। We are very delighted to be having Professor Shadab Sami sir, and he is an assistant professor at NIFT Patna. Academics he has been involved since last 15 years. Before that, he is working in places like Mumbai and New Delhi. And he has a huge experience in terms of photography, video production, audio productions, and related things. So this is something that every startup will. हम लोग कुछ भी ये करें तो हम लोग को फोटोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम प्रोडक्शन कैसे करें, उन सब सारी चीजों का एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है। वेबसाइट भी बनाए तो हमारा विजुअल ग्राफिक्स कैसे होना चाहिए। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के बाद आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन विद हिम। जितना इंटरेक्शन, आपके जो भी डाउट्स है छोटे बड़े, वो सब जो है सर के साथ दोनों डिस्कस कीजिएगा। विद दैट आई पास ऑन द माइक टू यू। Thank you, Rajiv ji, for inviting me here, and I'm thankful to each one of you who are sitting here and have taken time out to come and listen to me. In this world of communication with a digital platform, human interaction, one-to-one interaction and one-to-one communication has reduced over a period of time, and especially post-COVID. That's why, from my experience of academics, when I started almost 10 years ago, I used to carry a lot of presentation material with me. All photographs, videos, slides, and without that, my class was incomplete. But during the time of COVID, when everything shifted to Zoom meetings, Teams, Google Meet, somehow out of my own realization, I felt that there is a cognitive, psychological impact of these screens onto human minds. And when I flash something onto the screen, or when we look at something at the screen, somehow we are not able to listen to the person who is talking. So this is how I have just briefed you about the kind of material I'll be using. Now, second thing, all of you are having microphones with you. So before I begin, I would like to understand my audience, because as a communication designer, it is important for me to whom I am addressing to. So please, one by one, please, in short, please tell me a little bit about the professional angle of how you are contributing at BHub. Please. Anyone can start. Yeah. Something number one. You want to know about what thing? Just the professional part, your name and the kind of business you are doing it. Okay. My name is Alok, and I'm a founder of Farming Organic Farms. We are basically providing farm fresh corn milk and other few farm fresh products like mangoes and other kind of stuff. So we are working on natural farming, which can be promoted, produced, right? So this is in a simple way I'm doing. Alokji. Yeah, thank you. Please. I heard his good insurance. Where you are working on personalization. So it has organic and chemical show. Exactly what is the product? So Yeah. Okay. There is personalized as per customer demand, as per whatever state size and Okay. there is chemical show. And that is available online, right? Yeah. Perfect. Wonderful. Yeah, please.
I can see doing that, and I'm promoting the businesses of others. Okay. So, what exactly? Giving the some solution. We are building some of the kind of as and promoting some of the businesses like small scale businesses. The work is that, but I had included something like the with manufacturing. Okay. Thank you. मैं co-founder हूँ डे इवेंट हम लोग दो मेन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं एक तो ई-वेस्ट मैनेजमेंट प्लस है आईटी हार्डवेयर सर्विसेज ई-वेस्ट को हम मतलब एग्जैक्ट जो है मतलब कनेक्ट कर रहे हैं आईटी हार्डवेयर सर्विसेज से Okay. सर मेरा नाम शमशेर रज़ा है हम लोग ये Okay. हम लोग ऑटो वारंटी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू ई-वेस्ट। Okay. Wonderful. Hello sir, मेरा नाम शिल्पी तिवारी and we are providing the virtual reality based simulations for medical domain. Medical domain. Virtual. Virtual reality based simulation Okay. for surgery. मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मेरी कंपनी का नाम रॉयल कार्ड्स इंपोर्टेड प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आईडी कार्ड बनाते हैं जैसे ये वी हब का जो लोग लगाए हुए हैं ये मैंने ही बनाया और मेरे सबसे अच्छे जो क्लाइंट्स हैं पटना हाई कोर्ट का है, रेलवे है, डिफेंस है और काफ़ी स्कूल और कॉलेज का हम लोग आई कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं और एजुकेशन डोमेन में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। Thank you. Hello sir, my name is Vijay Kesri. I am the founder of Blue Drinks. We are providing the unsweetened flavor drink, which is we are offering to millennials and Gen Z. Basically, we are fulfilling the huge gap between sugary beverages and packaged drinking water. Hello, sir. My name is Kiशोर, and my company name is Ticket Lab. We provide IT services for startups and businesses. You can begin and happy. मेरा नाम आसनैन झा है और मेरे कंपनी का नाम ग्रीन ग्रामीण एनर्जी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड दरभंगा है। सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। अभी तत्काल में जैसे देहात में लाइटिंग की समस्या होती है, वेजिटेबल वेंडर्स को नहीं होता है, तो छोटा छोटा आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम छोटे लाला, डायरेक्टर ऑफ engineer.com। मेरा ई मार्केट प्लेस है, खास मैं वेंडर और किसान की प्रॉब्लम होती है तो अकाउंट है उसको बहुत बने सॉफ्टवेयर है। Okay. हेलो सर, मैं संतोष कुमार, मैं engineer.com से ही हूँ। यही B2B का बिजनेस है जिसमें एवरी प्रोडक्ट जो है डील करते हैं। Okay. Thank you. डायरेक्टर्स नेशनल हॉस्पिटल हम लोग का ब्रांड नेम है प्रॉफ हेल्थकेयर में है। हम लोग इंडिया का 5000 साल पुरानी एक हेल्थ सिस्टम है मर्मदार थेरेपी जो इंडियन आयुर्वेद है, उसको हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया और पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 फ्रेंचाइजी हम लोग इंडिया में डेवलप कर दिए हैं। इंडिया में लगभग 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर हमारे पास यहाँ पटना में आपके लोग फ्रेंचाइजी भी है, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल भी रहा है, परसों हमारे यहाँ एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी है इसी जगह में और कई जगह से काम चल रहा है, जैसे बिहार विधान परिषद है वहाँ भी हम लोग का सेशन रन कर रहा है, पटना वुमेन्स कॉलेज में चल रहा है, कई जगह से इसका रन कर रहा है। हम लोग एक ही मोटिव है कि लोग कैसे इसको सीख कर अपने आप को ठीक रख सके और साथ में इसको सीख कर आत्मनिर्भर कैसे बन सके। तो ब्रांड भी स्वास्थ्य और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, लोग ठीक है। मेरा नाम विकास हुआ है, कंसल्टेंसी
And like ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग टीचर्स को कनेक्ट करते हैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वन टू वन सेशन के लिए लाइक ऑफलाइन फॉर के टू 12 ग्रुप स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लाइक हमारा 3 सिटीज में लाइक ऑपरेशनल लाइक कोलकाता, पटना और लंदन। आप भी साथ में ही हैं? Hi sir, I'm Sri, Director Flight Type Online Service Private Limited. It must be customized API to the company providing more type of customized products. So Customized products, based on AI, AI. yeah, artificial intelligence, Okay. artificial intelligence, fly and AI. Okay. Myself Ramanan Thakur. मैं बेसिकली थ्रासियो मॉडल पे वर्क कर रहा हूँ। इस पे थ्रासियो मॉडल। Okay, what exactly is that? थ्रासियो मॉडल बेस्ड काम करता है ऐसे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको कितने मतलब उनका ग्रोथ कैसे हो, जस्ट लाइक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, जितने भी रिलेटेड मतलब एक मैन्युफैक्चरर को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये मैं कर रहा हूँ। इसी को थ्रासियो मॉडल पे। Okay. Is it done? Yes, sir. Okay. Thank you all of you for just enlightening me with your companies here. And I must say that I am sitting with very promising business founders and professionals who are practicing currently here at Patna. And I would just like to tell you a little bit about how I started off. And then I will go to the next question, which is for all of us. So I come from a city which is 75 to 80 kilometers from here, that is Muzaffarpur, and born in early 80s. I got my education done at Delhi, and I'm a master's in mass communication from Jamia Islamia. And I started my career with print media, and that was early 2000, almost 20 years from now. And the first newspaper I started writing that was Hindustan Times, and my beat was education beat. Later on, moved to Mumbai, and I got experience of working with television production houses like United Television. That was my first professional domain where I worked in Mumbai, and Balaji Telefilms. That was there I got into production with Ekta, and the couple of shows which I did during that period of time was Mahabharat, which was on 9X, and then Qayamat, Kasturi, Kis Desh Mein Hai Mera Dil, and that was the time where I was able to find Sushant Singh Rajput because his first show was for our production house, that was Balaji. And later on, I moved on to non-fiction genre of television production, Miss India pageants, Femina Miss India, then KBC, India's Got Talent, Dance India Dance, Dance India Dance Little Masters, Sadhan India, and so on and so forth. And finally, around 2013, yes, 2013, there was some turn in life which came, and then I had to come to academics. And actually, I never ever decided that I am the person who will be coming to academics, and I'm the person who will be fit for academics. But this thing was seen in me by my mother, and she has actually asked me to get into academics.
And I thought of that, okay. So initially I have experimented what I wanted to be. Now let's take it from the wishes and good wishes from mother, what she wants. I should also give it a try. That was the point. Then I started getting into academics, and then I was there with Marva Studios, Delhi, for almost 2 years, and then got into NIFT Jodhpur, and then finally NIFT Patna, took a transfer to NIFT Patna. Okay, so this was a very short journey about me. Now, the second thing which I would like to know is, all of us are sitting here for a cause. So, any one of you, or most of you, or whosoever wants to speak, please tell me what is your expectation out of the session. Because I come from a varied field. Photography is part of that. So I should be able to talk and should be able to have a discussion which is beneficial for most of us. Basically, we are seeing as a photographer. We product में photography का बहुत important है. किसी भी customer को एक एक से किसी convert कर सकते हैं थोड़ा. क्योंकि जब वहाँ online हो या कहीं products, क्योंकि image की importance कम होती है. क्योंकि image जैसा रहेगा basically 70% जो है डाटा है उसी convert होते हैं हमारे product. इसके बाद ये product online करते हैं या फिर जी लेते हैं बहुत ठीक है. Right. बहुत important रोल होता है कैसे भी सिंगल कोड लिख सकते हैं. हम लोग भी यहाँ आने के कुछ क्लासेस मिलेंगे वे हम लोग रिक्वायरमेंट भी है कि कैसे हम लोग बेस कर सकते हैं. हमारे पास की डिस्ट्रिक्ट क्या है और कैसे सेपरेट करके वहाँ तक पहुँच इस पर तो समझ लिया है. Okay. हम इसमें कहना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कैसे एस्पेक्ट हो सकता है बिजनेस में, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानकारी लेंगे. कैसे हम डिजिटल आजकल के युग है उसमें पेपर बहुत महंगा हो गया है. हाँ, एक दिन का प्रकाशन का 40,000 50,000 मांगता है. उसमें डिजिटल मार्केट में कैसे कर सकते हैं कि फायदे, यही पूछना चाहिए. सर मेरा भी है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग में जो ट्रैकिंग फ्रॉड हो रहा है. हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे सब लोग सुन लेंगे, आप बोलेंगे तो सुनेंगे. सर डिजिटल मार्केटिंग में जैसे ट्रैफिक पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था तो कैसे रोका जा सकता है. मैं कुछ काम किया हूँ. हाँ, किसी कंपनी का बन रहे थे ट्रैफिक और ट्रैफिक बोल रहा है कि मेरी कंपनी कस्टमर और कंपनी के पास कस्टमर डाइवर्ट हो रहा है. ये ओके, यस. Image positive or negative वो concept था. Positive तरीके से बनता है, कौन सा negative angle होता है. Okay. Sharing जब करते हैं. Okay. नहीं क्योंकि इग्नोर फोटोग्राफ्स भी रहता है किसी प्रोडक्ट वाले प्रमोट तरीका होते हैं. कुछ लोग खींचते हैं कुछ ऐसे फोटो ऐसे खींचते हैं कि उनको इतना मतलब कि हो जाता है को ले ही लेते हैं. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है फोटोग्राफी में या डिजिटल मार्केटिंग में इसका प्रोडक्ट मतलब कि सेल्स. ओके, तो उधर से आप लोग बेसिकली एक फोटोग्राफी से अपने ब्रांड को किस तरह से रिप्रेजेंट करें और अपने इमेज क्रिएशन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग इसको तो उससे सोशल मीडिया प्रोडक्ट को बाद में होता है. पहले तो आप फोटोग्राफ से किसी के पास पहले ब्रांड का इमेज एग्जैक्टली स्टोरी एक फोटो क्या है. एनी अदर फोटोग्राफी रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं. जी एक बार एक फोटो आता है, एक रनिंग मेथड बहुत सारा आता है, पता नहीं चलता. लेकिन फोटोग्राफी बहुत कुछ बोलता है. फर्स्ट इंप्रेशन भी पता चलता है वो क्या बोलता है. तो एक जो मेरा एक कुछ बताना है एक फोटोग्राफ के थ्रू पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जिसको शायद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ, इसी लास्ट टाइम एक सेशन अटेंड भी किया था. वहां पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक वर्ड्स के कुछ बोला नहीं, बस एक बस वीडियो तो 30-40 सेकंड का होगा. 30-40 सेकंड में सारा उनका पिच कंप्लीट हो गया. क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कैसे काम करना है. दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वीडियो को आप कैसे रिप्रेजेंट ध्रुव शक्ति होगा, ध्रुव शक्ति साइकिल. हाँ साइकिल. दैट मींस फोटो वीडियो का बहुत बड़ा रोल होता है. राइट.
जी आप कुछ कह रहे थे। एक ब्रांड डेवलप करने के लिए एक इमेज फॉर्मेट का या वीडियो फॉर्मेट का कितना योगदान है ब्रांडिंग के लिए, ये मैं जानूं। फाइन, ओके, सो आपको सुन के व्हाट आई कैन फील दैट मोस्ट ऑफ यू आर हियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एग्जैक्टली अ गुड फोटोग्राफ, How to present our and sorry, okay, and how Digital market. digital marketing. So, and people, and also I have got questions which are related to, let's say, videography, branding, packaging, digital marketing. Okay, so out of these, first I will begin with that component which is photography. And even in the photography component, we are talking about product photography, because as a business practitioner, we are very much concerned about our product. So when we look at a product, and if you are not a professional photographer, how you should go about it? The first and the important thing that should come out with your visual representation of image is what is your product all about. What is your product all about? Then the second thing which comes to mind is what your product can do. Even if you're not there to explain about the product. That means, for example, if I am taking this glass, and let's say, just imagine a shot that there is a dropping of a lemon here or an ice here, and there's a splash. You can imagine that shot. It's a close-up shot of the glass, the ice drops, and there's a splash. And it is about some drink. Maybe a strawberry, whatever drink you can imagine. So some sort of action is happening within the frame. The second example, the glass is there, the drink is there, and there is ice. Third example, glass is there, drink is there. Fourth example, just the glass. Now all this, we are doing photography. But what is the kind of change in terms of photograph? Because photography is primarily, we should keep in mind, and we should always think in that perspective, that this is not at all just the technical understanding. What we feel that if we have a good camera, better lenses, high-end production value, then we will able to have a good photograph. Is it so? Not at all. That means what we are hinting towards? We are hinting towards the thought process. We are hinting towards the idea. What exactly we want to say. So in all these four examples, where I have given you right from splash to the second example, the third and the fourth, can somebody tell me what is the kind of difference of the shot you can imagine? Which is a more dynamic shot? A splash would be a more dynamic, and which is the least dynamic? Just the glass with the liquid, or even without the liquid. Now, what is the difference between these two? The difference is of action. And from where the action comes, and who is the action responsible for? It is the association with human emotion. So whatever photography you do with product, we also, very importantly, we have to understand that there should be an association of human emotion. Some sort of action should be there. How you're bringing the product live. Second important thing. In my last example, I treated this glass or the liquid in the glass
as just the product, but in my first example, I treated it as a substance or a product which has a soul in it. कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारी ट्रेट होती है, हमारी पर्सनालिटी होती है, और हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, और हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, in the same way, whenever we go and do a photography specifically for product, we don't have to treat it as something which is non-living. It does has a soul in it. And that is something which actually excites human. Second, in the second example, the same glass, same splash. Third, fourth, second, and first, and last. If in the same example, the splash is happening, ice is there, the liquid is there. Now what I have done, I have added a hand. Can you imagine the shot? And the other rest examples, the hand is not there. What is the difference? There is a human connection. There is a connection of human with the product. That means whenever, if it's a lifestyle product, which has to do with our own life, day-to-day life, it is always important that we have some sort of presence of human. I think I'm clear till this point. Now, very important. This is what I was talking about, was just the content. For example, in the same product, if I say that with the ice, I put fire around. Let's say that there is a splash, there is ice dropping it inside, and there is fire. What kind of message it is giving you? Can you imagine the shot? Confusion is there. Some sort of contrast has come into picture. The moment I said fire, that means till now you were feeling energetic, relaxed, and some sort of breather with the, if you see that, even if you are walking on the street in summer, if you find a shot which is there with a splash and the ice dipping it on a hoarding outside, some sort of psychological relief you get. So some sort of psychological relief you get. Yeah, as you have rightly mentioned. So what is that relief? That is because of the presence of certain thing which is presented in a particular manner. The moment I have kept fire around, the contrast has come into picture. Some sort of misfit has come into picture. So I am trying to highlight this fact that we should always try to see which is the best suited or fitted component in our frame. Now, the other component. Understanding of frame is very important. What is frame? What you see inside your display area, or what exactly you are keeping inside, right? If you see there on the screen, everything which is visible inside that green or yellow line or fluorescent line is exactly the frame. Okay, so every part of frame is important. If you see, every part of the frame is important. At this point of time, I would like to flash the very first slide of my presentation. Please. Okay, so just a little bit about what I wanted to take you through is, this is a photograph.
which is shot by me at NIFT Patna studio. Yeah, at my department, fashion communication department. NIFT. NIFT Patna studio. And I would like to just take you through the different components. What all you can see in the photograph. Please, what all you can see in the photograph. The moment you observe, tell me. उधर ही देख के बोलते रहिए क्या दिख रहा है आपको फोटोग्राफ के अंदर. A person, second, lights, bubbles, heat, okay, stars, okay, meditation, okay, पर्सन है जो एंजॉय कर रहा है. enjoy कर रहा है. Eyes closed है, some sort of deep thought है. Devotion. Devotion, Devotion. excellent. Sorry, action, and that is that under that devotion, some sort of action which is going on. So it is intra sort of communication which is being depicted here. Okay, please come back. Now, so a photograph like this, the moment it comes to our mind, you must have gone through that. This is something which requires a lot of editing. Shutter speed, right. What's your name? Shobit. Very rightly said that Shobit has actually got into the technique of this photograph. Yes, Shobit, can you please explain? Shutter speed कम रहती है, हाँ, light motion slow चलने लगती है. That's why ये photo click हुआ है उस time. Yes. And apart from that, what Shobit has mentioned here is the slow shutter speed. What you see as yellow bubbles, what somebody has said, that yellow thing, circular thing, can you see that? And then at the backdrop also. So, to your surprise, there is not a single light I have used as a professional light. And the only light that is used is an LED torch. No, the only light I have used is an LED torch, and that LED, I took it from my father. LED torches which are here. So if you see what is there on the top of the head is actually the color of that LED. And these yellow boxes or yellow circular thing, what you see is because of the rotation of the lens. Glare. Actually, there was no light inside the studio. There were small holes, and this is outside sunlight. And the lens, the focus ring of the lens has been rotated. And it is said that when you shoot something on slow shutter, you cannot move your camera. The moment you move your camera, things will not be sharper. It will get dragged. But here, the movement has happened. And in the next image, when I will get into, I have moved the camera maybe more than 60 or 70 times. Still the image is sharp. So that is the second part of it. Now, coming back to this component of looking at frame. Whenever we put something inside the frame, and I have asked here that what you can see inside the frame, somebody said the person. The person. That is the most prominent part here. Why people didn't say that those yellow lights or hands or red thing? Because there is some sort of visual weightage. So when you design your frame, visual weight is something that is very important. So what exactly is visual weight? Visual weight is the size of the image, subject, object inside the frame. Being
If you see this person, the mannequin, the male mannequin body form is capturing most part of the frame. And that's why it was able to seek your attention. So for us, when the visual weight of the image of the product, what we would like to put in or shoot, that should be the bigger one. This is what I'm trying to say. For example, if I'm shooting this bottle and a glass, so I will always make sure that this glass has some sort of visual weightage presence in the frame. It should not be left in the corner, or it should not be too small, so that it does not catches the attention. Now, visual weight is not just about the size. It has to do with color. Out of all the colors there, the color which has the highest wavelength, that is the red color. But still, the kind of weightage is sought not because of red, but because of white. Because there is a contrast. There is a contrast which white is standing out, popping out against the red. So here, with the white color onto the person, a visual weightage in terms of color has been done. Third important thing in the visual domain comes the texture. How you are developing the texture on the frame, inside the frame with your product. I think I am with all of you, I'm not going too fast or too slow, and it is not boring. The moment it is boring, we will stop it. Because I am not here for something that should be forcefully done. It is a medium or platform where we exchange thought and ideas, and then we disperse. This is what I have understood. Okay, so when you are designing your frame, when you are putting up your frame, and when you're putting up your photograph, and in that, if it's a product, make sure that your product has a good visual weight. Your product should stand out from the background. Background or the backdrop. Now, the backdrop or the background should not be so busy, so that the attention is not onto the product. Now, I will cite a couple of examples here. When e-commerce started and we were going on online and shopping, it was just the product with a white background, right? All of us have seen this. We must have gone onto Amazon or Flipkart and we have seen that white. Whether even if there is a human element also, that person is shot against white. When exactly we started seeing the change? Can somebody tell me? Okay. So role of influencer is definitely there, and that is there. But how I'm talking about the overall language of e-commerce photography, how language of e-commerce photography has changed over a period of time. Because we as a business players in the market, we should always think about that how visual domain or the visual vocabulary is changing over a period of time. Sorry, I missed your first word. Both, yes, yeah. So clean and so attractive. Yeah. Okay, so coming to this point, that what I'm trying to highlight is that it was the time which was during and post-COVID, that lot of human intervention and the design language of photography got evolved, and it was intervention of more of human element which was brought into the product, especially in the e-commerce domain, where earlier it was just the product or just the flat background. Now, what happened? The flat background took the cases of got replaced with human, got replaced with market, got replaced with
busy street got replaced with architectures and many other things. So role and importance of background is very important when you choose your product. Now, the second thing which comes to our mind is, what kind of background is a good background? It depends on what is the platform we are putting your product. If you are shooting it as an editorial and putting it on a magazine, and if you are putting it onto an e-commerce, the time span is very important. That means the attention for which the consumer will be paid on a particular image. For example, if somebody is swiping on Instagram, that person is more engaged and involved into the main component of the product. For example, if you get and buy something, you get into the details of it. That's why later on, there was Flipkart and later on Amazon and everybody, all those service providers, what they did, they came up with the video. Was video initially there? No. So these interventions, what exactly they are bringing in? They are bringing in, making it more customized. Somebody was saying that we are working on some customized soap. Yeah. So that is what I am trying to bring here. The importance of product, importance of size of the product in the frame, importance of background in your frame, and the platform where you're putting your frame product. That is very important. It should not be done in a way that you shoot a product and you go for all your collaterals, right from social media to print, and it is floated everywhere. Now, coming back to the another example, if I move ahead, please change the slide. Okay, so what I have decided today to come up with, and I was asked to give a topic. That one topic for we have to discuss. Now, when you have volume of work and when you have so many things to talk about, it is very, it becomes little difficult to actually come to a point and talk that what exactly you are looking at. That's why I did an initial Reiki of understanding that what is your need. Now, at that point of time, this topic is actually not making much of a sense. Because this is talking about today's impact of how photography, especially the fashion photography, is affecting youth in today's time. So coming back to the topic of putting your product, the fourth component, what you should keep in mind while you are doing photography is the glossiness. That your product should look glossy, attractive. Even the person who is buying, whether that person loves to be a clean or a dirty person, that is irrespective of the fact that, but the person's choices will always be something which is clean. So glossiness in the product is the most important component. And fifth component, what is most important along with this, is working onto the highlights. If I shoot this glass, I would request Bihab to give me another session someday down the line where I can come and demonstrate, because my subject is something which is more of a demonstration based. And I'd request you to come with your product, and then we will collaborate, and then we will shoot. And
We will come with the brands like Yes. So that can be done later on, but I'm just telling you that if I shoot this product and if I'm shooting it, and if I'm not able to highlight the three-dimensionality, that means I am somewhere sacrificing the potential of the medium. So another important thing is that your product should have a three-dimensionality presence, a component in the frame. The basic challenge of a photographer is that he is shooting in 2 dimension, something which is 3D. So the challenge is that it should look more 3D. And how it will look more 3D is that there should be a couple of layers which is being built to make it look 3-dimensional. Now, when we are actually shooting this component here is what exactly the highlights are all about, the edges here and the base. Now, very important, if can I have a white sheet of paper or something to demonstrate? Not the tissue paper, that so that it will be easier for me to actually little bit of demonstration I'll be able to bring across that what exactly I'm talking about. Sir, who is Mohammad Shadab Sami? Sorry. सर आपने बनाया है सर ये हाँ मैंने लिया है फोटोग्राफ किया उसके बाद कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं एडिटिंग नहीं okay so for example if I'm shooting against this top, okay, so from that angle you must be able to see the glass and there is a highlight to it, and keep focusing on the glass, and the moment I keep it here, what is the kind of change you can find? Is it there's a kick which is there's an addition to the base light that has happened. Okay, now if I further what I do that if I take it here, there must be some sort of light filling in here from this side. Yes. If your camera angle is from that side, I'm just trying to demonstrate. So whenever you are keeping your product, and the best part about product photography is that you can do in a very small setup. And this is also known as tabletop photography. You can tabletop photography. Very minimum amount of investment is required, and you can make a wonderful images. Tabletop photography highlights, creating depth, and creating wonderful, delightful images. Now, another important thing that is with the product is, I have told before that what your product can do. If you are talking about soap, the moment your company soap company comes up, what is the tagline? What is the punchline of your product? Yes. Care your skin in nature. Care your skin Naturally. naturally. Okay. So it talks about care. It talks about nature or naturally to attach to that. So if we talk about care, for example, agar inka soap hame shoot karna hai, all of us are there. So let's have a small brainstorming. I have not seen his product. I don't know, you must have seen. Yes. Okay. So Can I bring sir here only? है यहाँ पे? Yes. हाँ ले आइए ना प्लीज. प्रोडक्ट बिना किसी प्रोडक्ट की बात करना बड़ा हॉलो हो जाता है. ओके सो तब तक एक इसको देखिए जैसे मैं आपको जैसे चलता हुआ लाइट क्या काम है ये बता, उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं. जो वेजिटेबल भिंडा सब बेचते रहते हैं लाइट से कहाँ निकाले कोलकाता एग्जीबिशन में. मतलब ये बॉडी जैसा है ना सब कुछ सेम रहे. शर्ट का जैसे शर्ट हमको बेच करते हैं इसके ऊपर बात. शर्ट इसको डलवा दें क्या चलेगा ये?
नहीं प्रिंटिंग नहीं, एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे फ्लिपकार्ट वो डेमोन्स्ट्रेट करने I hope you are not getting bored with the session. Okay, and yes. सबके पास में ना सर्विस का या कुछ भी हम सबके पास में हमेशा कैमरा नहीं होता, तो उस पे थोड़ा शायद आपने नहीं फोन से फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। नहीं करता नहीं, I prefer इस आया है, I have all setup of camera, so further किसी को आगे यदि इस तरीके का काम हो तो कंसल्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए क्या अच्छा कैमरा कहीं फोन से चलेगा सर, फोन से हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपके बाइक के पास गए जानना था कैसे कर सकते हैं। छप्पन से या देखिए फोन में भी आपका जो फोन है उसके अंदर if you get into your camera, they will find a professional mode in that. Yes, sir, of course, sir. So please open that professional mode. प्रोफेशनल मोड को खोल लीजिए, अगर जिनके पास एक्सपर्ट मोड हो तो उसको खोल लीजिए, एक्सपर्ट के नाम से होगा या प्रोफेशनल के नाम से होगा। या नहीं तो एप्पल पे शिफ्ट हो जाइए, आ जाएगा। हाँ वो उस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। आइए ओके, तो आपको वहां पे जैसे आपने ओपन किया तो आपको वहां पे दिख रहा होगा कि देयर आर कंपोनेंट्स लाइक EV प्लस माइनस, ISO एंड you have हम दिखाते हैं ना, देखो काम। ओके, दिस इज एप्पल। तो एप्पल ने क्या किया कि इसको अलग अलग मोड कर दिया है और इसमें एक्सपर्ट मोड जैसा मोड नहीं दिया है। Pano is panoramic photo. फ्रेम लाइन ट्रेवल। Okay, so I will just come to my point back and then we will get into this. Yes. इस पे अभी आता हूँ। I will just finish this part. We were just trying to we'll just conclude this, then we will get into phones. So what I was trying to bring your attention towards is that let's talk about this product Bodhika, and it says Upton soap for natural glow and beauty. Okay, so now for example, if I have to shoot this product, what is the kind of preparation I have to do? Some natural element should be there. Natural element चाहिए होगा हमें। Natural element. इसमें जो प्रोडक्ट यूज किए बनाने में इसको वो होना चाहिए कि उससे ऑडियंस को पता चले कि क्या यूज हुआ है। क्या क्या यूज हुआ है। सेकंड थिंग, इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जो लगाया आसपास इंग्रेडिएंट होना बैकग्राउंड लिखा हुआ, प्लस फ्रेग्रेंस इसमें जैसे रोज का एसेंशियल ऑयल इसमें है, तो आसपास कुछ रोज का एसेंशियल होना चाहिए प्लस। ओके, सो अब क्या है ना, बहुत सारी चीजें आ गई। नेचुरल एलिमेंट आ गया, प्लस उसके अंदर उपटन आ गया, आपने बोला कि उपटन सोप है, एंड देन इसके अंदर कोकोनट भी है, देन इसके अंदर रोज भी है, देन इसके अंदर हनी भी है। ओके, एंड विद ऑल दिस अगर हम ये सब कुछ एक साथ यहाँ रख देते हैं, ये सोप रखते हैं, यहाँ पे सब कुछ एक साथ रखते हैं, रोज रखते हैं, उपटन, हनी, लीव्स, and we shoot it, how it will look? Terrific, sir. Naturally. Naturally, और कुछ
ग्रेट पैकेजिंग, ग्रेट लेवलिंग, सारा कुछ। ठीक है, मैंने उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना होगा, जैसे ऑडियंस समझ सके मेरा प्रोडक्ट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस को स्पून फीडिंग नहीं करना। हमारा अप्रोच यही हो जाता है टेलीविजन, फिल्म से लेके हर चीजों में कि हम समझते हैं कि वो बेवकूफ है, उसको बताना है। क्या हम कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी फिल्म देखने जाएं जिसमें फिल्म के साथ हमें मेकिंग ऑफ द फिल्म भी दिखाई जाए? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक सीन हो, शॉट हो, फिर मेकिंग ऑफ द फिल्म चले, फिर दूसरे पे जाए, कितनी देर आप बर्दाश्त करें? पहले सीन से दूसरे सीन के बाद छोड़ दें, कहानी आगे बढ़ दें, टेक कट एक्शन खत्म। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसका जो है वो है उपटन। तो हमें इसमें सेलेक्ट करना होगा प्राइमरी कंपोनेंट एंड सेकेंडरी कंपोनेंट, दैट व्हाट माय सोप इज ऑल अबाउट। तो प्राइमरी कंपोनेंट इसका जो आता है वो है उपटन, और सेकेंडरी कंपोनेंट जो इसका आता है वो है नेचर। यही दो चीज मेरे सोप को स्टैंड आउट कर रही है। इसमें टर्शरी कंपोनेंट हनी है, रोज है, कोकोनट है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सब कुछ यहाँ रख देंगे, उसमें उसको रख देंगे, शूट करेंगे, क्या मैंने बताया था, विजुअल वेट कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा विजुअल वेट होना चाहिए, विजुअल वेट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और जितने ज्यादा हमारे फ्रेम के अंदर कलर आएंगे, हर एक कलर अपने साथ एक डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, अपने साथ एक कहानी लेके आता है, अपने साथ हमारे एक्सपीरियंसेस लेके आता है। तो आप गुलाब का फूल लाल हो गया, उपटन येलो हो गया, देन कोकोनट वाइट हो गया, देन वो ग्रीन हो गया, कितने सारे डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं। मेरी पैकेजिंग जो है, अभी जो पैकेजिंग है, इस पैकेजिंग में भी बहुत मल्टीपल कलर्स हैं इसके अंदर, और समहाउ ये एक इंस्पायर्ड दिखता है मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो चल रहा है। कॉमन नैरेटिव जो है, जो कॉमन विजुअल लैंग्वेज वैसा दिख रहा है। जो चीज मुझे इसके अंदर डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे कलर्स डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ ये तो पैकेजिंग और डिजाइनिंग पॉइंट से बात हो गई। दूसरी चीज हो गई कि लोग बात करते हैं मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं। क्यों आज हम इतने सारे मिनिमलिज्म के पीछे पड़ गए सन 2017, 18, 16 के बाद से? पहले तो कोई ऐसे मिनिमल की बातें नहीं होती। यूजर का रिटेंशन बहुत ज्यादा हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो आजकल कोई बहुत झिकझाक नहीं पहनता। हम भी बिहार से ही हैं, तो कोई झिकझाक बहुत फ्लैशी ड्रेस लोग नहीं पसंद करते। सोबर, सॉफ्ट, सर्टल की तरफ आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो गया? हमारे इमोशंस चेंज हुए हैं। हम जिसके लिए बना रहे हैं वो किसी और प्लेनेट का आदमी नहीं है, वो हमारे बीच का ही है और हम जैसा ही महसूस करता है। तो अगेन एंड अगेन देयर रिक्वायर्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द सेटअप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अगर इस प्रोडक्ट को डालते हैं, इसकी पैकेजिंग पे नहीं जाता हूं, पैकेजिंग एक अलग डोमेन चला जाता है। इस प्रोडक्ट के साथ हमने यहाँ पे उपटन डाल दिया, उस प्रोडक्ट के साथ हमने लीव्स डाल दिया। ये दो कंपोनेंट हमने चूज कर लिए कि हम बताएंगे हम नया क्या कर रहे हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप ये सोचो जो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। बी हब का ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता ये है, क्योंकि आप लोग बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं।
ये तो वो है जो मार्केट में चल रहा है। हाउ वी कैन डू समथिंग गुड टू दिस, बताइए। पैकेजिंग डिजाइन तो भी जस्ट चलिए पैकेजिंग को साइड करते हैं, बिकॉज मैं कह रहा हूं अगर इसको शूट करेंगे तो क्या 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 कुछ कैसा होना चाहिए, उपटन, लीव्स, ये सारी चीजें। बहुत पहले 8-9 कंपोनेंट थे, उससे पहुंच के आगे ग्रीन पे, 2 पे, उपटन, लीव पे। अब हम सवाल ये हो रहा है कि मैं कोई और साबुन का भी ऐड देखता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा जो कंपोनेंट रख देता है। सॉस है तो टमाटर रख दिया, गुआवा जूस है तो गुआवा काट के रख दिया, शूट कर लिया। राइट? इज इट व्हाट द डिजाइन लैंग्वेज इज राइट? क्या करना चाहिए? What is the, this is where actually the thought process starts. अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो मार्केट में उन्हीं प्रोडक्ट के साथ ये लॉस्ट हो जाएगा। मेरा पैकेजिंग बिजी पैकेजिंग है। बिजी है, आपने देखा ये बहुत बिजी है। बिजी मतलब बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट हैं, तो मैं कभी भी इसे बिजी बैकग्राउंड के साथ नहीं रखूंगा, बिजी एलिमेंट्स के साथ नहीं रखूंगा। बोधि, बोधिका is, has it, does it has to do with something which is both component to it? knowledge of wisdom. Knowledge of wisdom. Knowledge of wisdom, or it does it has to do with something which is like both Bodhi culture, Buddhism, is it like that? We need to address this question. ऐसा नहीं कि बस यहाँ रख दिया और ये कलर अच्छा लग रहा है, चलो ये शूट। No. So we need to answer this fundamental question. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये इसको ऐसे करो तो अच्छा होगा। ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज योर बेबी, प्लीज ट्रीट योर प्रोडक्ट एज योर बेबी। जैसे वो घर में चलता है और उसके आगे कॉर्नर में कुछ होता है तो आप पहले से आगे पकड़ लेते हो, उसको कहीं चोट ना लगे, होता है ना ऐसा? लेकिन मैं नहीं पकड़ता। I also have a 1-year-old son and I let him go and taste what happens. He cries, then I talk to him that, this is pain. And 1 or 2 eyes, when it happens to him, he understands. Because the world outside will never protect him or her. Why I should protect? कल पूरी दुनिया में हर बार वो मेरी आंखों के सामने नहीं रहने वाला। इन द सेम मैनर आपका प्रोडक्ट भी हर वक्त आपके पास नहीं रहेगा, आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं। मैं बार बार इसी चीज की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोगों के लिए है। इसमें किसको क्या पड़ी है कि आपने इसके अंदर क्या डाला और नहीं डाला। जिसको पड़ी है वो उसके लिए जाएगा, जिसको नहीं पड़ी है वो नहीं जाएगा। वेरी सिंपल। सो इन द सेम मैनर आपको इस चीज को समझना होगा। सोल ऑफ द प्रोडक्ट, हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ नॉन लिविंग एंटिटी। बना दिया, संवार दिया, सजा दिया, अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को भी समझना होगा। बिल्कुल। किन के लिए है ये, किसके लिए, कौन यूज करेगा इसको? ये है यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल, कहाँ मिलता है? सर स्टोर सेगमेंट स्टेज में कंप्लीट नहीं आ पाया, अभी मार्केट में आया नहीं। ओके, ठीक है। फीडबैक होगा कस्टमर सेगमेंट कुछ जगह एग्जीबिशन में ये जाता है। देखिए मैंने खोला नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अंदर में कुछ पेपर बटर जैसा हो रहा। फ्रेंडली होने। हाँ, मैंने खोला नहीं था लेकिन मुझे ऐसा लगा। देखिए, अब नेचर की बात कर रहे हैं और पैकेजिंग में क्या यूज कर रहे हैं? पेपर। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और सबसे ज्यादा फैशन कॉन्शियस होने के बाद हम कपड़े सबसे ज्यादा खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और सस्टेनेबल और ग्रीन बात करते हैं।
क्या इसको हम वो जूट बैग के अंदर अगर इसको पैक करें और ये करें तो शायद आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम आइडिया. इसके बाद उसकी पैकेजिंग सब 3 लेयर होती है, प्राइमरी तो हो गया, बटर पेपर्स हो गया, तो उसका जो केमिस्ट्री होती है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा ना, उसके ऑयल जो पार्ट होता है एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि नहीं बाहर के रहेगा. ये हो गया. I do जूट बैग का थर्ड पार्ट में आएगा थोड़ा, इसके अंदर जो रखा जाएगा. Okay, fine. So इन स्टेप होती है पैकेजिंग के एक्सपर्टाइज जो मेंटरिंग कर रहे हैं इसके लिए. okay. Perfect. See, I am not here to criticize this product. Very simple. मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. दूसरा, ये प्रोडक्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है. आप इसमें अपने प्रोडक्ट को देखिए, इनका प्रोडक्ट मत देखिएगा. यही सिर्फ देखेंगे अपना प्रोडक्ट. सॉरी, आपका नाम? अजय जी ही देखेंगे इसको एज अ सो, वरना आप लोग सब अपना प्रोडक्ट देखना, राइट? देन ओनली इट विल मेक सेंस. सर्विस वाले अपने सर्विस सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्टेक्ट से देखेंगे. ओके, सो दैट्स it's already close to 6 and I would like to just conclude here the session and आप अपने मोबाइल में आपके प्रो मोड है, प्रो मोड में जाके आप ISO, अपर्चर, शटर को चेंज करके आप बेसिक फोटोग्राफ ले सकते हैं. एंड without much editing I have tried this and it gives a decent result. If you want I can मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, शायद अगर मेरे पास सेव है तो मैं देखिए, आप अपने शुरुआत कैमरा जो है वो मोबाइल कैमरे से कर सकते हैं. मोबाइल कैमरे से बिल्कुल करिए. और ये don't think that you have to always have a DSLR or mirrorless, then only you will be able to shoot. I am not able to find जो मैंने सेल फोन से प्रोडक्ट किया था right now, but you will get. देखिए, आपका जो सेल फोन से आप शूट करेंगे वो एक्चुअली आएगा कहाँ? वो आपको तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालना है ना, प्रिंट लेना नहीं है आपको उसको, राइट? एंड सो फॉर ऑनलाइन दिस थिंग can serve you at this point of time. Slowly, I will always encourage you not to buy a DSLR or a camera and keep it with you. Whenever you require, rent, shoot, and then, because every time when you will shoot, the technology will be advanced. The equipment will be something which is better performing than the previous one. So I don't want to just recommend you that buy a camera and then fix that money or lock that money into that context. That is not a good idea. Because in industry also, whenever I used to shoot, I never used to carry camera. It is all being provided on set by the vendor and the latest camera. Yes, sir. Rajiv ji, I would like to request you that if in future we should try to develop a corner here in P-Hub where there can be a common shooting platform, and I would more be happy to develop that corner of a photography section where any company who are here associated, if they want to shoot, they just do basic setup and they are able to shoot. It should not be a constraint that they are not able to. So just a suggestion. Look at this. Great suggestion, sir. Great suggestion. You already have camera. What's your name?
रामानंद ठाकुर Ramanand Thakur, you already have camera and setup. तो है कैमरा सर्कल में Yeah. So देखिए, तो भाई जुगाड़ टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप टेक्नोलॉजी सर इसको क्वेश्चन आ रहा है सर, इसके लिए छुट्टी की गारंटी क्या डिजाइन जो भी है इतना बेहतर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जैसे क्या देगा भाई स्टार्टअप जुगाड़ से पर्सनलाइज के 10 लाख से कौन स्टार्टअप कर देगा नहीं कर पाए तो वही तो मैंने आपके साथ ये एक बेसिक सा एक्सरसाइज लिया कि इसमें हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेचर, हम सूटनेस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम सेकेंड चीज क्या बात कर रहे हैं, केयर के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर दैट एलिमेंट विच कम्स टू योर माइंड व्हेन यू से केयर? आपके दिमाग में वो क्या वर्ड्स आ रहे हैं? वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें वो चीज, वेदर दैट अ सॉफ्ट फेदर कम्स टू योर माइंड, इट डिपेंड्स what exactly is that, or a bubble comes to your mind when it is there. Symbolic representation. Yeah, so based on that we figure out the list of component and then we get into what exactly we need to keep inside the frame. Then the color story. For example, आपका ये जो यहाँ पे color है, so this is more of a beige thing with a multi-color here. So against what background I should keep this so that it will stand out. That is the second level of understanding. Third, primary component, the things that will be in the frame. Fourth, context, whether it is static, whether it is falling, whether it is against a waterfall, whether it is kept onto the stones, where exactly this is, or whether it is just there onto the inside my washroom and it is there on the lifestyle shot, where exactly it is. So these things need, I cannot say कि नहीं इसको ऐसे कर दिए तो ये अच्छा हो जाएगा, sorry. तो डिफरेंट फोटो शूट Yes. देखना होगा कि यहाँ पे किस प्लेस पे मतलब हमारा सुटेबल उसके लग रहा है और उस पब्लिक कितना उसको पसंद कर रहा है उस पर्टिकुलर उस पोजीशन को या उसके या बैकग्राउंड को या इस तरह से करके यू कैन बोल सकते हैं मार्केट रिसर्च का फील्ड हो गया पर्टिकुलर उस एंगल्स को शूट को उस बैकग्राउंड को उसको लाइक कर रहे हैं. Yeah. So I hope there are no questions left now, and thank you very much all of you for coming here and joining us today. And I can see a lot of new faces here, and my sincere request to all of you is to maintain some time. We try to maintain one time, 4:30 to 5:30, because the guest comes from different places and different institutions. They have to maintain that time. तो आप लोग से फिर से अनुरोध रहेगा कि नेक्स्ट सेशन हर सैटरडे हम लोग करते हैं, तो टाइम को आप लोग मेंटेन कीजिए. नॉट ओनली द अराइवल टाइम, आल्सो द डिपार्चर टाइम. आप जितना उसको ट्रैक करेंगे रोज नहीं होता जाएगा. सर आल्सो हैज टू गो समवेयर, देयर ही हैज गॉट हिज प्रायर कमिटमेंट्स. सो मैं आई लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स. सर ने अपना वैल्यूएबल समय दिया, एंड देन आई एम श्योर यू मस्ट हैव a good reason about the photography and the contrast and everything. So a big round of applause for sir. For token of appreciation. Photography अच्छी होगी आज definitely. Thank you. Thank you very much.